Good morning, dear students. I, Vidyasagar, your SS teacher, welcome you all in the e-learning class of Modern International School ISWA. Today, I am going to start subject history of Standard 8, and this is second part and the third video lecture on the topic iron smelters and weavers and factory owners. Dear students, yesterday we have discussed that how the British they have came here and how they expanded their empire here, as they primarily they came here for the trading, but as they getting the more and more profit, their trading was expanding and they modified themselves to rule here. Okay, now if you talk about the 19th century, then in India the trade center, the important trade center was in the eastern India was in Bengal. Okay, Bengal was one of the important center where all types of the textile was produced here, like the cheeds, plain white, or the check, or the silk. All type of textile cloths was made here. Okay, then if we move toward the southern areas, then from the Andhra Pradesh to the Coromandel coast, these were the major center where the textile silk and textile production was there. Wherever if we move toward the western area, then in Gujarat the main center was there. Wherever in the northern areas, the Punjab area was famous for the production of the silk and cotton clothes. Now the who were the weavers. Now as we know, weavers, it means those persons who are specialized in weaving the cloths. Okay, now we will know about the name and subgroups of these weavers. Okay, like they were the skill on from one generation to the next generation. Okay, the weaving, the work weaving, it was generation by generation, as the particular peoples like the Tati weaver of Bengal, the Julaha and Momin weavers of North India, Seld and Kaikolars of Devangas of South India are some of the communities famous for weaving. So these were the particular caste which they were engaged in weaving, and as they used to be weaved, so what used to be happen there, that they were it was the ancestral work and they used to opt, वो इसे जो है अपने पूर्वज के काम के रूप में अपनाते थे और जो है वो बुनकर, है ना, बुनाई का काम करते थे. एज द फर्स्ट स्टेज व्हाट स्पिनिंग, है ना, उसे जो है स्पिनिंग किया जाता था, घुमाया जाता था, धागे को घुमाया जाता था. ए वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन. द चरखा, सबसे पहले उसे चरखे में घुमाया जाता था, या जो हाथ में लेकर करते थे उसे तकली कहते थे. ठीक है, वेयर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, इसी से जो कि घरेलू इंस्ट्रूमेंट था, इससे ही उसे जो है धागे को एक जगह स्पिन किया जाता था. सेकेंड, द थ्रेड वाज स्पिन ऑन चरखा एंड रोल्ड बाय द तकली, है ना. व्हेन द स्पिनिंग वाज ओवर, द थ्रेड वाज वोवन इनटू क्लॉथ बाय द वोवर. और जब थ्रेड को समेट लिया जाता था, तब उसे जो है वेवर के द्वारा उसे बुन दिया जाता था. ठीक है, इन मोस्ट कम्युनिटीज वेविंग टास्क वाज डन बाय मैन. ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैन ही इस काम को किया करते थे. सो द डायर्स दे वेर नोन एज रंगरेज. डायर्स यानी जो कपड़े को रंग देते थे, उन्हें जो है रंगरेज कहा जाता था, है ना. In the previous topic, whenever about the Indigo Revolution, you have also gone through this. Okay, the Rangrej and the different type of Lathiyals. So these were the peoples who were engaged in the indigo production, and finally they used to do the production. Okay, now for printed cloths and weaver needed, they need the specialist block. और प्रिंटेड क्लॉथ्स यानी कि जो शीटदार जो कपड़े होते थे, उस पर ब्लॉक्स यानी कि बड़े बड़े आकार के जो चिन्ह दिए जाते थे, उसके लिए एक चिप्पी गार की ज़रूरत पड़ती थी. ठीक है, द हैंडलूम्स वेविंग ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विथ प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियन ऑफ इंडियंस. और जो हैंडलूम्स, एज वी नो दैट इंडियंस
textile, it all was done with the hand. Okay, or that's why it was done on the handlooms. Okay, so the decline of Indian textile, as we can see that the Indian textile was declining. Okay, due it was very fine quality, it was very famous, but as we know that since we were doing the work manually, and in the Britain at the same time the industrial revolution was started. First was this reason, and second reason was that they also imposed the heavy taxes on us. Okay, so that if we will import this to England, then we have to pay more and more taxes, and if we will pay more and more taxes, then how many we can save for us? This was the major problem. So these two major problems which badly influence the Indian textile industries. Okay, now the Indian textile now had to compete with the British textile. The British textile, which was basically produced with the mechanized system, as it was cheap also. Wherever in the Indian textile scenario, all the work, it was basically done by hands, so it cost a bit more. And this was the major problem, that while we were also lacking in the industrialization, as well as we also have to compete with them, as the most and important that we were being colonized by British. So there were no any areas from where we could escape. Okay, now the exporting textile to England also became interestingly difficult. Now the beginning of the 19th century, England made cotton textiles successfully, as they have been suppressed us, and they used to brought our raw materials, and they complete this was done. ये ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि भारत के बाजार को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाता, और उसे जो है विदेश से कपड़ा लाकर उसे सस्ते दामों पर बेचा जाता, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भारत के लोग जो है वो पूरी से पूरी तरह क्या करते, विदेशी कपड़ों पे जो है वो क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, है ना। इसलिए आज भी जो है आप कहीं कहीं देखते हैं कि कंपनी या किसी और चीज़ों का विरोध किया जाता है, क्योंकि कंपनी कभी भी जो है वो पब्लिकली हित की बात नहीं करती। वो पब्लिक हित की बात सिर्फ सरकार कर सकती है, लेकिन कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है, इससे पब्लिक का नुकसान होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखते हैं कि देश में कहीं भी जो है कंपनी के प्रति बहुत विरोध किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है, और इसलिए गांधी जी ने जो है वो चरखे के माध्यम से ये संदेश देना चाहते थे कि हम जो है स्वदेशी बनाएंगे और अपना खुद से बनाए हुए कपड़े पहनेंगे। ओके, सो द थाउजेंड ऑफ वेबर्स दे वर बीइंग अनएम्प्लॉयड, और बहुत सारे जो हजारों हजार जो वेबर्स थे वो क्या हो गए, बेकार हो गए। ओके, द बंगाल वेबर्स वेर द वर्स्ट हिट, एंड इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप बाइंग इंडियन गुड्स एंड एजेंट्स नो लॉन्गर, यानी कि यहाँ का सामान जो है वो भी खरीदना बंद कर दिए। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरह आज की स्थिति भी लगभग वैसे ही बन चुकी है, किस तरह जो है हम दूसरों के निर्यात पे, है ना, दूसरों के इम्पोर्टेड सामान पे हम डिपेंडेंट है और अपना कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।